Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I'm the Director Operations at PARSA ECHO Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to the new ECHO session in series of Hepatitis ECHO. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Please try to join the session through iECHO email link to mark your attendance. We also like to thank Ferozzon's Laboratories Private Limited for their unrestricted educational grant. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA, intending to disseminate knowledge and best practices. PARSA ECHO Pakistan started as hub in 2017 and became the first super hub in Pakistan in 2021. We are following the guidelines of Project ECHO with an objective that community providers learn through video technology to participate in guided practice with specialist mentors. They acquire new skills that allow them to treat patient otherwise referred out. Patient with chronic condition get high quality care without travel and waiting. We protect patient privacy, so no information in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you are all muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for question and use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on request. For CME credits, please get in touch with Uzair. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 24 hours. You are requested to fill it out as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of the participants, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. Our expert for today's session is Professor Shahid Sarwar, currently serving as Professor of Medicine and Gastroenterology at Allama Iqbal Medical College, Lahore. Along this role, he is a visiting physician and esteemed medical institutions, including Jinnah Hospital, Lahore, Doctors Hospital, and Medical Center in Bahria International Hospital. He graduated from King Edward Medical College in 97, followed by achieving fellowship in medicine (FCPS) in 2001 and gastroenterology fellowship of the Royal College of Physicians (FRCP) Edinburgh in 2019. He contributed significantly to medical education as teaching faculty, holding roles of assistant and associate professor in renowned institutions such as King Edward Medical University, Gujranwala Medical College, and Services Institute of Medical Sciences for over 13 years. His other substantial contribution to medical literature included over 50 publications in both international and national impact factor journals. So without further delay, I will hand over to Professor Sarwar. Thank you very much for kind introduction. Let me share my So can you see my screen? Yes, we can. Bismillahirrahmanirrahim. I'm extremely thankful to Project ECHO and PARSA Trust for giving me opportunity to be here with all of you to share thoughts on today's topic that we are going to discuss. It's basically acute hepatitis, and we're also going to talk about hepatitis B and C co-infection as well. I have nothing to disclose. Now, just to give the perspective and get the perspective of what we are going to discuss, I will start with the case presentation. It's a 37-year-old man who has presented with jaundice for the last 4 weeks. He complains of weakness, lethargy, along with anorexia. And for the last 1 week, he has started developing ankle edema. When we performed his examination, he was deeply jaundiced. He has hepatomegaly, and there is positive shifting dullness. He's otherwise fully oriented with no hepatic flap. Now, this is his 3rd visit, and his nausea and vomiting has settled, but he's worried that now he's developing ankle swelling along with the worsening jaundice. These are the labs which are available, and in this we can see that his bilirubin is still high despite having this jaundice for the last 4 weeks. Its bilirubin is around 21 with predominantly direct with raised transaminases, and albumin is now declining to 3.1. And his serological workup for viruses shows that his anti-HB core IgM is positive, and his ultrasound is showing that he has got mild ascites. Now, he was reassured during his last 2 follow-up visits that his disease is self-limiting and will settle itself. But now he's worried that should he start with the treatment or not.
Another case scenario, a 50-year-old lady has presented with both hepatitis B and hepatitis C. And once she got her PCRs done, it was positive for C, but it's negative for hepatitis B. She's otherwise asymptomatic, nothing on physical examination. She's diabetic for the last 15 years, and which is well controlled on oral hypoglycemia. And the lab shows that there are raised transaminases, but otherwise albumin is normal, RFTs are normal. And once you do the serological workup, you see that her hepatitis C RNA is positive, surface antigen is positive, but DNA for hepatitis B is negative, E antigen is seroconverted, and she's negative for Delta virus, and her fibroscan shows that the liver is perfectly normal. The question here is, we are going to treat her for hepatitis C, but do we need to worry about her positive surface antigen despite having negative DNA and E antigen seroconversions? So we'll come back to these cases once we have discussed this situation. You're all aware that hepatitis B has got a prevalence all over the world, and it varies from region to region and may vary from 1% to maybe up to 20% in sub-Saharan Africa and Southeast Asia. As far as the acute hepatitis B is concerned, you don't have much data in literature regarding this particular virus. The reason is that its overall prevalence is low. Then majority of the patients who get this particular disease in infancy or in newborn age, they are mostly asymptomatic. Then there is a very high spontaneous resolution of acute hepatitis B. More than 90% or up to 95% are going to get rid of this virus by itself. And then there is a very effective vaccine which is available for last many decades for hepatitis B as well. So when you go into the literature, most of the information that we have about this virus is based on studies that were performed a few decades back. Now for hepatitis B, risk of transmission is same. Transmission routes are the same as for hepatitis B and C. Chronic hepatitis B and C, just like unscreened blood transfusion, sexual transmission, sharing or reusing of syringes, IV drug abuse, tattooing, or people who are residing in healthcare settings, facilities, renal dialysis patients, they are at risk of developing this, acquiring this particular virus. Then those having long household contact and intimate contact with patients of hepatitis B. So that's the same that we see in hepatitis B and C otherwise as well. Now, how do these patients present? And do they become symptomatic or not? That depends on the age at which they acquire this acute hepatitis B. If somebody gets hepatitis B in newborn or in childhood age, majority of them are going to be asymptomatic at this acute phase. But majority of them are going to end up with chronic hepatitis B. As compared to that, if somebody gets acute hepatitis B in adult age, most of them are symptomatic. They do develop jaundice, they do develop symptoms of this virus, but they are going to have self-limiting disease, and majority of them are going to get rid of this virus without any treatment. So in symptomatic acute hepatitis, patients below 30 years of age are very less. It's around 10 to 15% patients of symptomatic acute hepatitis B are seen in patients who are less than 30 years of age. And mostly you diagnose acute hepatitis B based on positive anti-core IgM antibodies within the 30 days of the symptoms. And you have to prove that there is no pre-existing hepatitis B, and it is not a case of reactivation of hepatitis B. That I will talk in a minute. That is something that we can confuse with the patient of acute hepatitis B. What are the symptoms? It is just like any patient with acute hepatitis: fatigue, nausea, poor appetite, irritability, depression, itching, weight loss, and around 70% patients of acute hepatitis B are going to be jaundiced. Now, once you move to the workup and investigations, obviously these patients are also positive for surface antigen, positive for core IgM, their DNA is positive, their E antigen is positive, but we are more familiar with these investigations in chronic hepatitis B. And if you get these done in acute hepatitis B, there are a few differences that you will find. Risk mode of transmission in most of the cases of acute hepatitis B is sexual transmission or vertical transmission. If it is in young patients, they are vertical transmission. In adults, it's sexual transmission, as compared to IV drug abuse and that transmission in chronic hepatitis B patients. Patients of acute hepatitis B are going to have higher surface antigen titer. They are going to have higher DNA titer.
they are more likely to be antigen positive, but their antigen titers are lower as compared to the patients of chronic hepatitis B. And this basically represents the natural course of acute hepatitis B in majority of immunocompetent patients. At first, there is going to be an incubation period of that may vary between 2 to 12 weeks. And then there is a symptomatic phase where they will have positive surface antigen, E antigen, their DNA will be positive. And then around 3 to 6 months, these tests starts getting negative, getting seroconverted from surface antigen. They start developing anti-HBs antibodies. From E antigen, they start developing anti-HBe antibodies, and their core IgM is now converted into total or anti-HB core IgG. So majority of the patients who are immunocompetent, they are going to get rid of this virus. And if you test them after more than 6 months, they will have this antibodies positive, which gives you an idea that this patient had hepatitis B in previously. And generally, by definition, we declare anybody with positive HBs antigen beyond 6 months as a chronic hepatitis B. But we really have to be careful in labeling this, because when you see the data, around 36% of patients are going to get this HBs antigen negative by the week 24. But if you keep following these patients, it may take up to 2 years for a patient of acute hepatitis B to get rid of this. So it may be a patient. So once you see at 6 months, you still expect many of them to get rid of this virus in next coming weeks and months, because the average median time for surface antigen loss is around 26 weeks. And it can take longer for few genotypes of the hepatitis B, just like hepatitis genotype A takes much longer in clearing surface antigen. So what I'm trying to tell here is that 6 months is the boundary, and generally it's a classical traditional teaching that surface antigen beyond 6 months is chronic hepatitis B, but there is still possibility of the virus being resolved by itself even up to 1 year or maybe up to 2 years in these patients. And there are things which affect this rate of spontaneous clearance. If somebody has got low DNA levels at acute hepatitis B stage, they're more likely to get rid of this virus. Similarly, those with low titers of E antigen, they are more likely to get spontaneous resolution of acute hepatitis B. Unfortunately, less than 1% of patients with acute hepatitis B can develop acute liver failure. And this is a rare occurrence, but does exist. And in patients with acute liver failure, hepatitis B constitutes a significant number, varies from 5 to 20% patients of acute liver failure may be suffering from acute hepatitis B. So what are the risk factors? Why a small percentage will end up with acute liver failure as compared to a big majority which is going to resolve without having this complication? So there may be the factors which are contributing to this potentially lethal outcome. It may be the concomitant alcohol use or concomitant use of drugs. Then genotype B has more chances of developing acute liver failure. Those with very high titers of HBV DNA, they are also have more chances of developing liver failure. And then obviously certain subgenotypes and mutations are also have been found to be associated with risk of developing acute liver failure. So generally, if somebody with jaundice and hepatitis B, acute hepatitis B develops encephalopathy, and there is no pre-existing liver disease, you label it as a case of acute liver failure. And there the survival is less than 25%, and with majority of them needing liver transplantation to survive. Now, just one slide to highlight a problem that you may face in interpreting the results, that acute hepatitis B versus reactivation of a chronic hepatitis B, because both of these can end up with acute liver failure. And interestingly, core IgM can also be positive in a case of reactivation of chronic hepatitis. But what can help us in differentiating this situation is the presence or absence of signs of chronic liver disease. Obviously, that will be present in somebody with pre-existing chronic liver disease. Similarly, titers of core IgM are much higher in acute hepatitis B as compared to acute on chronic hepatitis B. And on the other hand, HBV DNA and E antigen titers, they are much higher in cases of reactivation as compared to a pure case of acute hepatitis B, leading to the liver failure. So these are the points which can be used to differentiate the situation.
So we can't talk about the treatment of hepatitis B without talking about its vaccination, because this is one disease which has got a very good vaccine available. And this question always arises. Still, we are unable to get rid of this particular virus. Now, the issues with that is availability, cost, and then the universal coverage. Yes, question कि किसको vaccinate करना है and population में किसको target करना है, that is what is hindering the eradication of hepatitis B. Because एक policy है high risk group vaccination की और एक है mandatory vaccination की. So I will just share with you one Italian experience. In 1983 में it was decided कि वो high risk population जो है उसको target करके vaccination start करेंगे. After 8 years, there was no difference in prevalence or incidence. So in 1991, what they decided is that now they are going to vaccinate every newborn. They are going to vaccinate everybody less than 12 years of age for the next 12 years. And this vaccine was made free of cost, and its coverage was taken up to 95% of the population. So that showed significant results, and you can see that by 2012, their incidence declined from 12 per 100,000 to 0.9. So जो targeted vaccination वाली जो approach है, that has got its limitation, because with that your new cases will keep on entering, और उसकी वजह से फिर आप overall prevalence और incidence में ज़्यादा फर्क नहीं डाल सकते. So right now the recommendations जो WHO या AASLD की आप देखते हैं, तो it is recommended to have universal coverage of vaccination at birth, and by that we means that the first dose of vaccine should be given within 24 hours of the birth. Then up to 19 years जो नहीं हो सके उस vaccination में, उनको vaccinate करना है. Here it is recommended कि 19 to 60 years age में भी vaccination जो है वो सबके लिए mandatory है, जिनकी vaccination initially नहीं हो सकी. Beyond 60 years, you can plan for high risk obviously IV drug abusers or homosexuals or dialysis patients or patients with those living in correctional facilities. Obviously, वहाँ आप targeted policy को चला सकते हैं. We all know there is a vaccine which is available, and 3-dose वाली भी और 2-dose वाली भी vaccine is now available. There is a accelerated program भी है जिसमें आप 0, 1, 2 करते हैं, but then you need another dose at 1 year as well. Availability is vaccine or is the major issue in our country. We all know that for the last few years जो है vaccination की availability हमारे लिए बहुत बड़ा problem बना हुआ है. And there is no question that it does impact the outcome. It does impact the prevalence and incidence of not only hepatitis B, but it has shown very significant impact on the prevalence of hepatocellular carcinoma as well. So, but when you look at this B vaccination coverage, so हम आसानी से देख सकते हैं कि in our country this coverage is not beyond 20 to 40%, which is very dismal. और जब आप 24 hours के within 24 hours of the birth vaccination की बात करते हैं, तो we even don't have data about this. So this is very alarming, because when you look at the target set by the WHO for year 2030, they want 90% birth dose vaccination coverage, and overall all of the world it's around 50%. But recently there is a paper published in September 2023 in an impact factor journal from Pakistan, which shows birth dose vaccination coverage is only around 2 to 3% in this country. Now, 1 minute on what to do if somebody gets a needle stick injury with a needle used for a patient with hepatitis B. This depends on vaccination status of the recipient. If the recipient is not vaccinated and the patient is B positive, then the recipient has to be given immunoglobulins, and you start with the vaccination 14 days after the immunoglobulins. If the patient is negative for surface antigen, then just vaccination is enough. And if you don't know the status of the patient and our recipient is also not vaccinated, then in the case of high risk population patient, if वो patient जो है अगर कोई IV drug abuse है या वो सारे high risk category में आता है, तो even then you will use immunoglobulins along with vaccination. लेकिन recipient अगर vaccinated है, तो there your decision is based on the titer of anti-HBs antibodies. And that should be immediately checked in the recipient. If it is more than 10, you don't need to worry. But if it is less than 10, you have to give immunoglobulins. Patient negative है तो वहाँ पर सिर्फ vaccination ही करेंगे, और अगर status known नहीं है patient का और recipient is vaccinated but उसका titer 10 से कम है, तो again you may go for immunoglobulins as well. So this is how you deal the needle stick injury. Now the next treatment of acute hepatitis B, the question is, should we treat everybody with acute hepatitis B?
इंटरेस्टिंगली इसमें भी आपको डाटा वही बहुत ज्यादा नहीं मिलता, उसकी वजह वही है, प्रेवलेंस कम है, स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कवरेज होने की वजह से वैसे ही पेशेंट्स जो है बहुत ज्यादा नहीं है। बट लिटरेचर में जो 4-5 स्टडीज यू कैन आइडेंटिफाई, दे आर ऑल ओल्ड स्टडीज जो लैमोवोडिन और एंटाकोवर वगैरह के साथ हुई थी। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पेशेंट ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी जिसको कोई लिवर फेलियर नहीं है और जिसको कोई इस तरह इम्पेंडिंग लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है। So in studies mein, when you see the data, there was no difference whether you treat or not treat, or these patients are going to have spontaneous resolution, so it does not impact the outcome of the patient. That's why in a routine patient of acute hepatitis B, you are not going to go for antiviral therapy with entecavir or tenofovir, what we have available, because spontaneous resolution rate is very high in these patients. लेकिन यही जब आप you see in patients who develop acute liver failure due to hepatitis B, there the studies have shown the benefit of these using these drugs, because in this study you can see patients, around 30 patients, and all of them received the treatment, and when they were followed, all of them survived, not only survived but had surface antigen clearance. So there is a very strong data to show that in case of possibility of liver failure, you may start with the treatment, but it does impact the outcome of these patients. But you have to be very careful. Obviously, these are the patients who, for them, the decision for transplantation has also to be done very timely manner. So as of now, the indications for giving antiviral therapy in acute hepatitis B are the acute liver failure, or persistence of bilirubin more than 5 milligram per deciliter for more than 4 weeks, or INR more than 1.5, or if somebody develops encephalopathy or ascites, you will consider and you will start with antiviral therapy, and then we'll follow along the same protocol as is used in chronic hepatitis B. There are few studies and groups who recommend that in case of genotype A, you may consider the starting treatment in patients with acute hepatitis B, because I already told that spontaneous resolution can take much longer, and the chances of chronicity be thode zyada hai as compared to the other genotypes. Now, a few minutes on co-infection. Now, that's another issue which is very prevalent. Around 10% patients of hepatitis B are also positive for HCV as well. And when you look at in another way, patients of chronic hepatitis C, it's around 15 to 20% patients are B positive. Or if you're checking for anti-HBs antibodies, this percentage can go up to around 30 to 60% as well. What's the reason? Because दोनों वायरस जो है उनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन शेयर्ड है, दोनों में हाई रिस्क ग्रुप भी सिमिलर है, सो पॉसिबिलिटी ऑफ को इन्फेक्शन जो है इस वजह से एग्जिस्ट करती है. And there is no question that patients who have got co-infection, they have more severe disease and they have more chances of developing cirrhosis as well as hepatocellular carcinoma. जब ये दोनों वायरस को एग्जिस्ट करेंगे तो उसमें ये पॉसिबिलिटी कि कोई एक वायरस डोमिनेंट है या दोनों क्वेसेंट हैं या उनमें से जाहिर है दोनों एक्टिवली फंक्शन कर रहे हैं, all these possibilities exist. But dominantly around 50% patients have got HCV dominant disease. And that is from here this issue of HCV of HBV reactivation after clearance of HCV सामने आया, because दोनों वायरस को एग्जिस्ट करते हैं और उसमें ज्यादातर केसेस में C डोमिनेंट होता है, and by dominance we means that it suppresses hepatitis B virus. So once you clear C, there is a possibility that hepatitis B will get reactivated. So let's see what happens. So how I identify that whichever is dominant is obviously getting all the tests done. एक तरफ आप C के लिए PCR और उसके सारे टेस्ट करवाएंगे, दूसरी तरफ आप B के serological markers including HBs or anti-HBs and anti-HB core and DNA करवाते हैं. So in an HCV dominant scenario, either the B is basically occult, where you will not find any HBs antigen, but anti-HBs antibodies, anti-HB core antibodies, these are positive. Otherwise, PCR and obviously you will see the surface antigen is positive, DNA is positive, but the titer will be low, and obviously those antibodies are going to be negative in that. So why this happens, that why is this कि जब दोनों coexist करते हैं तो उसमें फिर C dominant हो जाता है, and that has to do with the pathway of replication of these viruses, because B totally different virus है. It goes into the nucleus, it gets incorporated into the DNA in the host DNA as CCC DNA, और वहां से फिर ये होस्ट सेल की सारी मशीनरी को यूज करता है फॉर इट्स रेप्लिकेशन. और उसके मुकाबले में C is a virus which only remains in cytoplasm, और वहां से जाहिर उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है.
Now, what happens is that when the B enters, it mutes the interferon stimulated gene. This is IS gene, is a gene which is responsible in the immune system for responding to any virus. But B में खूबी है कि जब ये अंदर एंटर होता है तो इस particular gene को silent कर देता है and keeps replicating. But once the C enters, this gets recognized by this particular gene. And interferon production, intrinsic जो interferon production है within the cell वो start हो जाती है, and that suppresses the hepatitis B. So obviously, जब आप C को clear करेंगे, again the possibility is this कि again वो जो gene है which is responsible for production of this interferon वो stop कर जाएगा और B will have the opportunity to start replicating and flourishing. So that is one theory which is generally very commonly whenever you go through this pathophysiology, this is one thing that you will commonly find in literature is responsible for this particular strange association. So there are data, this study of more than 1,500 patients, they included of co-infection, and out of those 242 were even having active chronic hepatitis B. So what they saw is that when they treat these patients with direct antiviral therapy for hepatitis C, the reactivation of chronic hepatitis B was seen in 24% of patients who were having chronic hepatitis B, as compared to only 1.4% patients who have resolved hepatitis B. That means their surface antigen was negative, their DNA was negative, and they were having anti-HB or IgG positive. So we can see from here that the risk of reactivation is there if the virus is active. Another study which shows around 40% of patients with co-infection are going to have reactivation of hepatitis B, with few of them ending up with liver failure as well. So that once the DAA was introduced, because DAA से तो पहले तो हम interferon use करते थे, तो those are equally effective for B and C as well. So this issue was never there before DAAs. But after utilization of DAAs, suddenly people start realizing that the B activate होना शुरू हो गया जब आप C को clear करते. So then people started using nucleoside analogs as prophylaxis for preventing this reactivation. So this study shows that when you use nukes with DAs, there is no reactivation. But when you are giving direct antiviral therapy for hepatitis C, without starting any treatment for hepatitis B, around 30 patients out of these 67, they got reactivated. So that was the reason कि right now the policy is कि जब भी आपने hepatitis C का treatment करना है और direct antiviral therapy start करनी है, तो you will test that patient for 3 tests. That is surface antigen, anti-HB core antibodies, anti-HB S antibodies. अगर इसमें surface antigen positive है, तो we are going to check for DNA. If DNA is positive, so you will first consider the possibility that the patient fits into a standard treatment protocol for hepatitis B. अगर उसका viral load 2000 से ऊपर है, ALT raised है, तो वो पेशेंट वैसे ही कैंडिडेट है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड एनालॉग. तो वहां तो वी विल स्टार्ट विद द न्यूक्लियोसाइड एनालॉग एंड विल कंटिन्यू एज इज रिकमेंडेड फॉर हेपेटाइटिस बी. बट अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है और डीएनए वायरल लोड कम है, लेस देन 2000 है या नेगेटिव है, तो इन दैट केस इवन वी नीड टू स्टार्ट न्यूक्लियोसाइड एनालॉग. बट ये प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट है. दैट मींस द ट्रीटमेंट विल स्टार्ट विद डायरेक्ट एंटीवायरल थेरेपी and will continue 3 months after completion of direct antiviral therapy. So just to avoid the possibility of reactivation. उसके मुकाबले में अगर somebody is surface antigen negative, but there is no anti-HBs antibodies, you will still check for hepatitis B DNA to discover a patient with occult hepatitis, because in that case you may consider starting treatment. But otherwise, if surface antigen is negative and antibodies for surface and core are positive, you just need to monitor. You don't need to start direct antiviral. Start with nucleoside analog for hepatitis B. So that we have already discussed that if patient is a candidate for hepatitis B, otherwise as well, you will start the treatment. If he is not a candidate, but surface antigen is positive, you will still start the nucleoside analog and will continue 12 weeks after the completion of the treatment. If surface antigen is negative, then you don't need to just start the treatment. You just monitor the patient for reactivation. And whenever you have a suspicion that despite PCR negative for hepatitis C, ALT is rising, you will check for DNA. To rule out the possibility of reactivation of delta of hepatitis B. So coming back to our cases, our first case was a young man who has acute hepatitis, and his jaundice was continuing even after 4 weeks, and now he was developing ascites and shifting dullness, and his labs has shown us that he has got core
IgM is positive and his bilirubin still more than 20. So this is one patient where you will consider starting with a nucleoside analog, because now we are beyond 4 weeks, and the risk is that he may end up with liver failure, because ascites is a sign which shows you that the liver dysfunction is worsening. So you may opt for starting the treatment. And in this patient, what we found was that her surface antigen was positive, her PCR was negative, but for hepatitis B, but her C is positive. Now, this is a classical case where you will, before starting antiviral therapy for hepatitis C, you will also start nucleoside analog treatment as well, either entecavir or tenofovir, any of that can be used. And this treatment will be continuing 12 weeks after completion of direct antiviral therapy, where you can stop if the viral load is still less than 2000 and patient otherwise is not a candidate for the treatment of hepatitis B. So, ladies and gentlemen, in the end, acute hepatitis B is a self-limiting illness in most of the cases, and it just needs supportive treatment in more than 90% patients. Treatment is only limited to a very small group of patients where the risk of liver failure is high. There you can consider treating with nucleoside analogs in a patient with acute hepatitis B. HBV and HCV coinfection, that poses high risk of cirrhosis and HCC. And here you need a detailed serological evaluation to identify the pattern of coexistence, which virus is dominant. And in this situation, if you are planning treatment for hepatitis C with DA, you will always consider need or no need of starting nucleoside analog before proceeding with the treatment of hepatitis C. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Shahid, or you summed it up very nicely. Or to all the participants, I think you'll have access to some of the slides or your flow sheets. They are very, very helpful. But with just a word of caution, in primary practice, what I would recommend is to, instead of handling these acute hepatitis patients or impending liver failure patients and co-infection patient, please seek help from the nearest gastroenterologist or hepatologist who are nearest, so that you can always follow them. You can follow on the treatment, but stay in touch with your nearest gastroenterology unit. Any questions in this regard? The house is open. आपका अपना कोई केस है जो आप शेयर करना चाहें, कोई कमेंट आप देना चाहें, आप अनम्यूट करके you can give. शायद जी ये क्वेश्चन है from Mr. Mudassar. Our society has affordability issue for Hep B complete workup. तो मैं भी इससे मिलता जुलता ही सवाल करने लगा था कि आप हाउ डू यू नेविगेट, आई मीन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बेयर मिनिमम आप क्या करना चाहेंगे, तो सर अगर तो एक्यूट हेपेटाइटिस में तो फिर कोर आईजीएम इज द टेस्ट टू बी डन, और ऑब्वियसली वो हमने थोड़ा सा उसको डिस्कस किया था कि वो एक्यूट ऑन क्रॉनिक हेपेटाइटिस में भी बाज़ दफा पॉजिटिव हो जाता है, बट उस सिचुएशन में जाहिर है क्रॉनिक हेपेटाइटिस को आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री उससे कर सकते हैं. सो मिनिमम हमें कोर आईजीएम तो उसके लिए चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें सेल्फ रेजोल्यूशन का बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इन तीनों वायरसेस में, ए, ई और बी. और ये केस डिबेट के भी अच्छा टेस्ट बहुत कॉस्टली है टू नो व्हिच वायरस वी आर डीलिंग विद, बट दैट ऑब्वियसली एड्स टू द कॉस्ट ऑफ द पेशेंट. और उसको अगर आप ये देखें कि उनमें से मे बी 95-96% पेशेंट्स ने रिजॉल्व हो जाना होता है, तो ये कॉस्ट वाला इशू बिल्कुल इसके अंदर है. स्पेशली हम पब्लिक सेक्टर में जब हम टेस्टिंग करते हैं तो वहां पे जनरली ये वाले टेस्ट अवेलेबल नहीं हमें होते. अवेलेबिलिटी वी हैव इज सरफेस एंटीजन और एंटी एचसीवी, ये अवेलेबल होते हैं. ये वाले टेस्ट जनरली हमें प्राइवेटली करवाने पड़ते हैं.
बट proceeding without testing for viruses वो dangerous हो सकता है, because we may miss the opportunity of treating the patient अगर उसको indication है, so फिर time की selection कि कहाँ जाके आप फिर उसको treatment के साथ intervene करें, वो हम miss कर जाएंगे अगर हम baseline पे test नहीं proper उसके करा पाते। आपकी क्या opinion है? जी, इसमें मैं ये ऐड करूंगा कि हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी जो टोटल है एंटी HBC टोटल, ये बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि बहुत सारे जो स्पेशली अभी जिस तरह डॉक्टर शाहिद ने जिक्र किया ओकल्ट हेपेटाइटिस बी एंड ओवर्ट हेपेटाइटिस बी, तो ओकल्ट हेपेटाइटिस बी में सरफेस एंटीजन इज नेगेटिव, कोर एंटीबॉडी इज पॉजिटिव और जो एंटी HB एज सेड दैट्स नेगेटिव. So it just give us some idea. So usually इस सिनारियो में अगर एक टेस्ट मैं यूजुअली जाता भी हूँ अगर हेपेटाइटिस बी का शक हो, बट आई टोटली एग्री कि हमारे अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज हैं और यूजुअली जो हमारे हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में भी स्क्रीनिंग है वो सिर्फ सरफेस एंटीजन और एंटी HCV की है. There's another question. Can hepatitis B vaccine be given to immunocompromised patients, such as patients on hemodialysis or with HIV? जी शायद. So ये तो high risk patients हैं और इनमें तो vaccination mandatory है, और अगर हम गाइडलाइंस देखें तो यहाँ तो वैक्सीनेशन की डोज भी बाज दफा वो डबल रिकमेंडेड है, रादर देन 20 माइक्रोग्राम दे रिकमेंड 40 माइक्रोग्राम दें. सो इनकी वैक्सीनेशन तो मैंडेटरी है. डायलिसिस के पेशेंट्स और आईवी ड्रग अब्यूज तो मैंडेटरी है, और इनमें यहाँ पे तो प्रोबेबली टाइटर चेक करना आफ्टर 1 month ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स इज आल्सो एडवाइजेबल, नोइंग कि ये पेशेंट हाई रिस्क पे है. यू कांट अफोर्ड कि वैक्सीनेशन फेलियर का केस आप आइडेंटिफाई ना करें और बाद में वो दे एंड अप विद these infections. जी, और एक और बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है जो अक्सर रेज होता है, दैट इज यूज ऑफ पैरासीटामोल इन एक्यूट लिवर फेलियर पेशेंट. जॉन्डिस पेशेंट है, लिवर इज अगर हम उसे एक्यूट लिवर फेलियर के कैटेगरी में भी ले आए with raised INR and encephalopathy, or we have patient is running a fever of 101. So how safe is paracetamol in this scenario? सर जो मिनिमम डोज आइडेंटिफाइड है ऑफ लीडिंग टू लिवर फेलियर वो तकरीबन 6 ग्राम है. सो और ऑब्वियसली जो फर्स्ट 1 to 2 वीक्स हैं विद एक्यूट हेपेटाइटिस पेशेंट्स के साथ भी फीवर और बॉडी माइल्जियास, सो आप पैरासीटामोल यूज कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली. यू डोंट यूज जैसे हम रूटीन में 2 टैबलेट्स PDS तक जाते हैं, इसमें नहीं जा सकते आप. ऑब्वियसली यू विल यूज 1 टैबलेट, और पेशेंट को कॉशन ये जरूर कर देंगे कि इस डोज को केयरफुली यूज करें. So it's more to do with the dose. If we remain careful on that, we can use paracetamol needed for resolution of symptoms. जी, आई एग्री विद यू. और एक जो चीज जनरल प्रैक्टिस में बहुत कॉमन है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेंड है इंजेक्टेबल पैरासीटामोल का, तो वो तो बिल्कुल मत यूज करें क्योंकि और जहाँ पे आपको अपनी अदरवाइज पेशेंट्स में भी जहाँ पे भी ओरल रूट है इट्स वेरी इफेक्टिव. सो यू शुड बी यूजिंग ओरल पैरासीटामोल. तो अनफॉर्चुनेटली जो हमने प्रैक्टिस में देखा है पेरेंटल पैरासीटामोल बहुत ज्यादा यूज होती है, तो वी शुड बी रियली डिस्करेज्ड. I don't know whether paracetamol suppository is available in Pakistan. I haven't come across, but that's another thing that can be used. जो rectal उसकी absorption इतनी बुरी नहीं होती. लेकिन मेरा नहीं ख्याल से अवेलेबल है. Okay. Any other question? अस्सलाम वालेकुम सर. ये जी अस्सलाम वालेकुम. जी डॉक्टर साहब. जी पैरासिटामोल के बारे में तो आपने फरमा दिया, डॉक्टर साहब ने भी फरमा दिया कि 6 ग्राम तक और 1 TDS तक तो लिवर पेशेंट्स में रूटीनली यूज़ की जा सकती है. और जहाँ पे हम समझे कि ये नहीं देनी चाहिए तो उसका अल्टरनेट क्या है? ब्रूफन दे सकते हैं? एनाल्जेसिक कौन सा सेफ है अदरवाइज? मेरा ख्याल है सर ब्रूफेन वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है. NSAIDs का यूज इन अ पेशेंट विद acute hepatitis, that is too risky.
जी, आप पैरासीटामोल ही देंगे। सच कोई अभी का एक कमेंट है चैट में कि पैरासीटामोल सपोजिटरीज आर अवेलेबल नेम ऑफ नेपा, बट आई हैव टू लुक इनटू इट। और लेकिन आपके पास जहाँ पे भी फीवर है, आप पैरासीटामोल इन डिफाइंड डोजेस में आप उसको दे सकते हैं। आप उसको ओवर यूज नहीं करें, लेकिन आप उसको दे सकते हैं। और जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो तो आपने यूज नहीं करने। और there is another question about use of steroids in acute liver failure. बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है शायद, जस्ट इफ यू कैन टच अपॉन इट। सर वो बेसिकली अगर नॉन स्टेरॉयडल तो कैन वी यूज स्टेरॉइड इंस्टेड ऑफ नॉन स्टेरॉयडल फॉर दिस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट? नहीं, लेकिन हम उसमें कौन से सिम्टम को टारगेट करेंगे? बिकॉज जनरली तो बॉडी एक्स, माइल्जियास, लो ग्रेड फीवर, हेडेक, ये वाले सिम्टम होते हैं। स्टीरॉइड्स मतलब वो तो लिवर फेलियर में जहाँ सेरेब्रल एडीमा बहुत ज्यादा है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, तो वहां तो मैनिटोल और इस तरह की चीजें यूज होती हैं, बट नॉट इन अ रूटीन पेशेंट ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस। एज सच लिटरेचर में कहीं आपको रोल ऑफ स्टीरॉइड्स नहीं मिलेगा फॉर इवन विद लिवर फेलियर। और एक और चीज आप जहन में रखें कि एज दिस फोरम इज मोस्टली द प्राइमरी केयर फिजिशियंस फोरम, तो जो आपके लिए जो की मैसेज है वो आइडेंटिफाइंग एक्यूट लिवर फेलियर एंड प्रॉम्प्ट रेफरल है। तो आई डोंट थिंक सो कि एट एनी स्टेज आप एक्यूट लिवर फेलियर को जनरल प्रैक्टिस में हैंडल कर रहे होंगे। तो यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ द सर्विसेज ऑफ हेपेटोलॉजी यूनिट क्लोजेस्ट टू योर लोकेशन। तो जो 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 मैसेज है वो ये है, फॉर एनी पेशेंट विद हाई बिलिरुबिन, हाई आईएनआर, एनकेफेलोपैथी और इज डेवलप्ड एसाइटिस। देखिए, माइल्ड एसाइटिस, मिनिमल एसाइटिस आपको मिल जाती है विद हेपेटाइटिस उसके लिए, लेकिन अगर आपका आईएनआर मोर देन 5 सेकंड्स ऑफ कंट्रोल है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और आईएनआर इज मोर देन 1.5, और कोई भी आपको इनकेफेलोपैथी का साइन है, पेशेंट इज ड्राउजी, हेपेटिक फ्लैप है, कुछ है, तो you don't waste time. You have to immediately refer that patient is not fit to be managed, in an outpatient or in a primary care. Any other question? Again on parenteral paracetamol, does the injectable paracetamol has same lethal dose as for oral? Shahid, any comment on that? सो लाइकली पॉसिबिलिटी जो है कि उसकी लेसर डोज लीथल होगी। वो लिटरेचर में तो जाहिर है ज्यादा वो ओरली जो है उसमें, और वो डोज वेरी करती है उसमें, फिर स्टेज ऑफ लिवर डिजीज वो फिर फीमेल्स के लिए मच लेसर डोज टॉक्सिक होती है। आईवी तो जिसमें आपने पहले भी बताया कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज वहाँ ऑब्वियसली उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, उसका हेपेटोटॉक्सिसिटी भी ज्यादा होगी। सो वो तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। और मेजॉरिटी पेशेंट्स में सर टैबलेट्स ओरल फॉर्म इज दैट वर्क्स वेरी वेल। और वैसे भी जनरली इनिशियल 1 वीक to 10 डेज हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। एट द हाइट ऑफ जॉन्डिस पेशेंट की एपिटाइट वापस आ जाती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट वीक जिसमें आपको इस तरह की मेडिसिन की जरूरत होती है। सो आईवी तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। एक और सवाल बीच में आया है सर अबाउट द चॉइस ऑफ एंटीवायरल ड्रग। उसमें दोनों यूज हो सकती हैं, एंटाकवर भी यूज हो सकती है, टेनोफावर भी यूज हो सकती है। अगर हम एक्यूट हेपेटाइटिस में ट्रीटमेंट का डिसाइड करते हैं, वहां कोई डिफरेंस इन रिजल्ट्स नहीं है, बट लिटरेचर बड़ा लिमिटेड सा है बिकॉज पेशेंट्स भी कम है और जनरली यू डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट इन दैम, बट दोनों ड्रग्स में कोई फर्क नहीं है। जी, मोस्टली हमारे यहाँ जो टीडीएफ आपने लिखा है, टेनोफोबिक डेसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट, ज्यादा एक्सपीरियंस इंटरनेशनली भी इसका है। टेनोफोबिर एलाफिनामाइड रिलेटिवली न्यू किड ऑन द ब्लॉक है। तो आई मीन एज फार एज एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड, बोथ आर शुड बी इक्वली इफेक्टिव। लेकिन चूंकि आप जब हम बात करते हैं तो जनरली हम गाइडलाइंस की और जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं,
तो उसमें जो TDF है दैट इज उसी के ऊपर आपको सारा डेटा इस वक्त मिलेगा। बट आई एम श्योर एज द टाइम पासिस बाय तो हमें ये टेनोफाविर एलाफिनामाइड जो टैफ है उसके ऊपर भी इक्वली इफेक्टिव डेटा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को मैं स्ट्रेट आंसर करूं तो एंटाकावेर और TDF एनीथिंग यू कैन यूज। और स्पेशली आपने कहा प्रोफाइलैक्सिस के लिए तो यू आर गोइंग टू गिव इट फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, आप उसको पहले दे रहे हैं और 3 महीने बाद तक कंटिन्यू करके उसको बंद कर रहे हैं, ठीक है। और एनी एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? शायद आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है मेरे ख्याल में। अच्छा, लिटरेचर में अब क्योंकि ये सर ना, अब जो वैक्सीनेशन और उस चक्कर में अब जाहिर है ये पेशेंट्स बड़े कम हो गए हैं। सो जी। वो ये बड़ी आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। आई वेंट थ्रू द लिटरेचर। सो लिटरेचर बड़ा पुराना है, और ट्रीटमेंट वाले जो मैंने दिखाई आपको स्टडीज, वो तो 15-20 साल पुरानी है। जी जी इसीलिए वो आपको रिसेंट को लिटरेचर इस पे कम ही मिलता है, बिकॉज ज्यादा जो फोकस है वो वैक्सीनेशन है। वो यू विल एग्री कि हमारा बहुत बड़ा इशू है। मतलब सर, वैक्सीन जो एंजेरेक्स है वो तो अब फ्यू ईयर से अवेलेबल नहीं है। देर इज ओनली वन ब्रांड जो अब अवेलेबल होना शुरू हुआ हुआ है। सो आई डोंट नो ये इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है कि वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। आई आपकी थिंक क्या इस पे है? जो जो मुझे थोड़ा सा आइडिया है, जो एंजेरिक्स का इशू आया था अनफॉर्चुनेटली बिकॉज एंजेरिक्स इज GSK प्रोडक्ट एंड दे हैड सम इश्यूज जब एक दफा कराची में देयर वाज एन अटैक ऑन द स्टोरेज फैसिलिटी जहाँ पे और उसमें बहुत प्रॉब्लम आए थे और बहुत सारा देयर वाज अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ, क्योंकि वो सारी कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स ही वहाँ पे थी और उसके बाद कोई कमिटमेंट नहीं हो सकी थी उस लेवल पे। तो अब एक लोकल कंपनी प्रोक्योर कर रही है। एंड अनदर थिंग इज जो hepatitis B vaccine that is being provided by Hepatitis Control Program Punjab, that is of Indian origin. तो वो मैंने एक दो उसकी वाइल देख रहा था, तो दैट्स मेड इन इंडिया। सो जो वो वहां से आ रही है, तो जो लोकल है आई थिंक एमवेक्स के नाम से गालबन एक वैक्सीन है जो शायद अवेलेबल है। जी और सर, एमवेक्स। या तो वो हम यूज करते हैं। एंजिरक्स अनफॉर्चुनेटली this question is for how long we have to take these medicines. इसका देखें, डॉक्टर शाहिद ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। दिस क्वेश्चन हैज बीन डायरेक्टली ऑन द चैट टू मी कि एक आपने आइडेंटिफाई ये करना है whether the patient, for example, on hepatitis C treatment, whether he is a candidate for hepatitis B treatment, ये शाहिद ने बताया था। For example, viral load are more than 2000, ALT is raised, तो वो एक अलग कैटेगरी है जिसमें आप ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस बी का शुरू करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। और जो सी का जो 3 to 6 मंथ की ट्रीटमेंट इंडिकेशंस की प्रोफेसर अल्ताफ साहब ने लास्ट टाइम बहुत अच्छी डिटेल में डिस्कशन की थी। द अदर थिंग इज प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस में ये है कि जिस तरह आप अगर आइडेंटिफाई करते हैं फॉर प्रोफाइलैक्सिस सरफेस एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट, तो यू विल गिव द patient treatment for the duration of antiviral of hepatitis C, continue for 3 months and then stop. उसके बाद आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं उसके वायरल लोड से कि उसमें कोई प्लेट तो नहीं आ रहा या आपको दोबारा कोई जरूरत है। तो बी का तो एक फॉलो अप चलेगा। हेपेटाइटिस सी का जो होता है वो हम SVR चेक करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना उस हिसाब से भी एक्ट करते हैं। तो वो इस तरह से है। लेकिन आपके पास उजैर का और किरण का भी नंबर है, आप सब लोगों के पास। यू कैन हैव वो जो स्लाइड्स हैं वो अवेलेबल होंगी आई एको के ऊपर भी। तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दो स्लाइड्स अगेन एंड अगेन बिकॉज वो जो फ्लो शीट्स हैं दे आर एंड दे विल प्रूव टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। जी ये there's another question in the chat. It's again a direct message. Is Hep B prophylaxis given in all Hep C? शायद इस तरह दोबारा थोड़ा सा explain कर दें। Question is hepatitis B prophylaxis given in all hepatitis C patients?
HCV co-infection की। इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली एनीबॉडी जहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस सी, वहां बी के लिए टेस्ट कराना मैंडेटरी है, और वो टेस्ट भी फिर वो तीनों टेस्ट कराने आइडियली अगर पेशेंट फोर्ड मैनेज कर सके तो तीनों टेस्ट कराने जरूरी है, सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीबॉडी और कोर एंटीबॉडीज। देन योर डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन दिस। अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो एज ए रूल यू हैव टू स्टार्ट विद द प्रोफिलैक्सिस। वहां वो डिबेट के डीएनए लेवल्स और डीएनए पॉजिटिव और नेगेटिव वो है जरूर, लेकिन मेन पॉइंट इज कि अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, even if the DNA is negative, you will start with the prophylaxis. But ये prophylaxis होगी, जैसे डॉक्टर सर ने बताया कि वो DAs जब खत्म हो जाएंगे उसके 3 months के बाद कंप्लीट करके आप फिनिश कर देंगे। अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है और डीएनए पॉजिटिव है, फिर असेसमेंट ये होगी कि वो बी का कैंडिडेट है फॉर ट्रीटमेंट के नहीं। वी ऑल नो कि अगर उसका वायरल लोड 2000 से ज्यादा है, अगर उसका ALT रेज्ड है, तो फिर तो ही इज अ कैंडिडेट फॉर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। वो ट्रीटमेंट जो है वो प्रोलॉन्ग होगी, बिकॉज ई एंटीजन पॉजिटिव है तो 1 साल बाद तक ऑफ ई एंटीजन सीरो कन्वर्जन देंगे। अगर ई एंटीजन नेगेटिव है स्टार्ट से ही, तो वहां तो इट्स मच लॉन्गर ट्रीटमेंट, वो मे बी गोइंग फॉर 3 to 5 years और मे बी फॉर लाइफ। लेकिन अगर उसके डीएनए वायरल लोड पॉजिटिव है बट इट इज लेस देन 2000 और वो कैटेगरी में फिट नहीं होता फॉर स्टैंडर्ड हेपेटाइटिस बी ट्रीटमेंट, तो वो उसको फिर प्रोफिलैक्सिस वाली कैटेगरी में आप रखेंगे। आप न्यूक्लियोसाइड एनालॉग शुरू करेंगे अलोंग विद डीएस, और जब डीएस फिनिश हो जाएंगे तो उसके 3 months बाद तक कंटिन्यू करके फिनिश कर देंगे। बट वहां आप डीएनए दोबारा चेक करेंगे, और अगर वहां उसका आपको डीएनए फिर मिलता है मोर देन 2000 तो फिर ठीक है, फिर उसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू होगी जैसे किसी भी हेपेटाइटिस बी के पेशेंट की है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर हम फ्लेयर पेशेंट का होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और हम उसको बी की प्रोफिलैक्सिस नहीं देते इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेस एंटीजन, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ लिवर फेलियर एज वेल, क्योंकि ये एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस की सिचुएशन बन सकती है। So that's why it is important कि decision for prophylaxis जो है वो at the time of starting treatment करना, and that's why it is important कि अगर आप C treat कर रहे हैं तो B को टेस्ट जरूर करना है आप। Thank you. That is B and C cases in dialysis patient. ये बिल्कुल है, dialysis is always a high risk category, और unfortunately पाकिस्तान में जो है this is a scenario, तो इसको भी हम आगे मेरे ख्याल में डिस्कस करेंगे। So it's about time. Shahid, thank you very much. If there is no other question, तो Kiran, I hand it over to you. Sure. Thank you very much, Professor Shahid साहब। और नेक्स्ट वीक हमारा जो सेशन है वो डॉक्टर जीशान अली के साथ है, ऑन आई थिंक 6th को आ रहा है। एंड वी डू इनकरेज केसेस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। सो अगर आपको अपना कोई केस प्रेजेंट करना हो तो आप खुद भी हमसे फॉर्मेट लेके कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन प्रेजेंट इट फॉर यू। And again, we are grateful and thankful to Pakistan Society of Hepatology and Ferosson's Laboratories Private Limited for the unrestricted educational grant, and our team at PARSA Trust and PARSA ECHO Pakistan. So Allah Hafiz. Uzair, you can please call off the meeting. Thank you. Sure, ma'am. Thank you everyone.